Good morning, guys. So I woke up little late. It was raining since the morning. So काफ़ी ठंड है. So मैंने उठने में थोड़ा लेट हो गया. So आज मेरे दिन की शुरुआत में मेरी सिलेबस देखने लगाता है. Every UPSC aspirant how to know about the syllabus of UPSC. It will be available on the UPSC official site. Either you can print करके अपने पास रखते हो और मेरी तरह से एक A4 शीट लगा कर सिलेबस लिखो. और कई बुक है जो UPSC सिलेबस बताते हो, ये भी काफ़ी है. Every aspirant should have the syllabus in their study table. It will really helpful when we are reading the newspaper क्योंकि न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ न्यूज़ आता है. We don't want all this news because we have only limited time. As an aspirant, we know that we have only limited time to cover all the syllabus. So we want only those news which are connected to our syllabus. तो उसके लिए syllabus अच्छे से read करना ज़रूरी है. After reading the syllabus, I was covering the current affair. काफ़ी कुछ टॉपिक्स के बारे में एडिटोरियल आ गया है, like preventing of money laundering act, lack of productivity of the parliamentary section, WTO demand on the Indian wheat waiver, international north-south corridor. That was the project of Iran, India and Russia, and the hybrid electric vehicle. This was the note I was taken while reading the current affairs. After covering the current affairs, I am going to read the ancient India about the topic later Vedic period. I was reading this topic once, and I highlighted the main portion. So I was reading only the highlighted portions. आफ्टर रीडिंग दिस टॉपिक मैंने वैदिक पीरियड की सेटलमेंट के बारे में कंफ्यूज हो गया कि अर्ली वैदिक फेस में वो कहाँ सेटल किया था और लेटर वैदिक फेस में वो कहाँ सेटल किया था. सो आई टुक माई एटलस ऑफ इंडियन हिस्ट्री. सो इंडियन हिस्ट्री की प्लेसेस के बारे में वो सेपरेट मैप है, सेपरेट पीरियड की मैप है. लाइक इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए एक मैप और वैदिक पीरियड के लिए एक मैप, गुप्ता पीरियड के लिए एक मैप, उसकी प्लेसेस मार्क किया था. सो नाउ आई नो द प्लेसेस दे वर सेटल्ड एंड आई वाज कंटिन्यू माय रीडिंग. So after reading ancient history, I am going to write answers. This is मेरी सबसे फेवरेट बुक है. इसमें मेरी करंट अफेयर्स के बारे में क्वेश्चन कलेक्ट कर लिखता हूँ. Actually, I was brought these books 1 year earlier, but I don't use it because it's very cute. Now I am using these books for writing the questions. So यहाँ मैंने GS3 के बारे में क्वेश्चन लिखता हूँ. And the question is this: what is blue economy? How it can be equitably and sustainably harnessed, also lever for economic growth. Present India's strength and weaknesses in this regard.
And this was the final result of my answer. So now I am taking polity. Recently our new president was elected. So I thought आज हमें president की topic पढ़ना चाहिए